और हाउ मेनी ऑफ यू थिंक क्या है ठीक है साल में 2 दिन कर लिया, बाकी तो हम दिल से हिंदुस्तानी है? वेयर डू यू स्टैंड? लेट मी आस्क, व्हाट डू यू थिंक? टेल मी, व्हाट्स योर नेम? निशा। यस निशा, हाँ बताइए, आपको क्या लगता है? खुल के बोलिए, कोई बात नहीं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, बोलिए बोलिए बोलिए। आप नेशनल फ्लैग लगाएंगी नहीं लगाएंगी? आपको क्या लगता है कि जरूरत नहीं है फ्लैग लगाने की? क्या जरूरत है? सर फ्लैग लगाने की जरूरत तो वैसे 15 और 20 जनवरी को सब लगवाते हैं। हाँ, सब लगाते हैं, लेकिन उसको 2 दिन लगाने से जरूरी नहीं कि आपको वो दिख रही है, अपनी नेशनलिटी दिखा रहा है आपको, आपके दिल में होना चाहिए राष्ट्रीयता। और जरूरी नहीं कि आपको 2 दिन लगाने से दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। 2 दिन लगाने की दिखावे, लेकिन आपको लगता है 365 दिन कहीं ना कहीं तो आपके आसपास जहां आप काम कर रहे हैं या जो आपका जहां पे आप रहते हैं, कहीं ना कहीं झंडा जब आपको दिखता है तो कम से कम एक रिमाइंडर है कि भाई आप इस देश की वजह से हैं और इस देश को आपकी जरूरत है। हाँ, आपको लगता है? ये मानती हैं आप? हाँ, ये मानती हूँ मैं। ये आप मानती हैं, ठीक है, वेल डन। व्हाट डू यू थिंक? आई गेस हम नॉर्मली भी तिरंगा को देखते हैं, ठीक है, और कार्स में भी लगे होते हैं। आजकल तो काफ़ी स्टैचूज भी आ गए हैं, काफ़ी थिंग्स हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, अपने तिरंगा को ही फॉलो नहीं कर रहे हो, अपने रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, क्राइम्स कर रहे हो या फिर कुछ भी ऐसा कर रहे हो, तो फायदा क्या? देयर इज नो पॉइंट। देयर इज नो पॉइंट। You know, I want to say something about symbolism. हाँ. And I know a lot of people think कि 2 दिन तिरंगा लहराने से क्या फायदा है. But if I can ask this, गणेश चतुर्थी भी साल में एक बार आती है. आप उस दिन जाकर एक नई गणपति जी की मूर्ति अपने घर लेकर आते हैं. रामनवमी आती है, दिवाली आती है. तो क्योंकि आप दिवाली के दिन अपने घर में ढेर सारे दिए जलाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एहसास साल भर आपके साथ नहीं रहता. Sometimes symbolism is also very important, and I like the fact that we are so happily wearing the symbolism on our chest with pride or at our homes with pride. This symbolism is equally important. I'm not saying that for the remaining days we can forget about patriotism, nationalism, our national flag, our duties towards the nation. But these 2 days, they go a long way in instilling in us a pride of being an Indian. Correct, but should it be a switch on, switch off? That's my point, Nirmal ji. Absolutely not. Yeah, Absolutely not. Where I'm coming from is how many of us actually today, or even from your times when you were serving, did they actually do it because मुझे नौकरी करनी है, मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ? Today also, even today, a lot of people are saying, let's put the tricolor on our DP. Let's put the tricolor here. Let's put the tricolor there. Oh, let's see tricolor everywhere. But how many of them are actually doing it because they feel so much pride about the country, and they will make sure they will not litter, they will not break a signal, they will not go ahead and try and khule mein, go and defecate in the open. They will not try and throw plastic bottles. They will reduce the plastic footprint. They will start counting their carbon footprint. That is the real service to the country, right? But this nationhood instilling is because you want them to be energized enough to serve the country. Absolutely, I agree. Totally agree with that. I'm just going to go to Nirmalji and then come to you. Yes. Diwali. Yeah. I think it's very important that this symbolism is more like a festival, but you live it through the year. I mean, twice a year maybe you have a symbolic celebration, but you live it for every 24/7 for rest of the days. So symbolism is just symbolism, but it has to be backed by your action in all spheres. Deepaji, as you talk, share your thoughts, I also want to understand from you, how has India changed from your perspective? Has it changed for the better for 50% of this country's population, that is the women of our country? Okay. So let's get into that now. Yes. First, definitely, I would like to say, charity begins at home. हर घर तिरंगा, जब तक घरों में तिरंगा नहीं आएगा, how do you think the children in the house, children will look at it, they will see how it is respected and imbibe that love for their tricolor. And again, love for tricolor means that if you are respecting your tricolor, if you love your tricolor, you will always have that sense of discipline of being a good citizen. Now, talking about how it has changed, how my India at 75 is my new India, because my new India, my India at 75 talks about inclusion, talks about women empowerment. It has become a world of equal opportunities. We are talking about, आज से अगर मैं 1 दशक पहले देखूं तो मैं अपंग कहलाती थी, अब मैं दिव्यांग कहलाती हूँ.
मैं एक महिला होकर बट वो शब्दावली के साथ साथ एटीट्यूड में चेंज है। बिल्कुल, हाँ। तभी तो मैं यहाँ बैठी हूँ आज। आप मुझे एक सशक्त महिला के रूप में इन नन्ही बच्चियों से मिलवा रहे हैं या पूरे देश से मुखातिब करवा रहे हैं, क्योंकि ये वो देश अब बन गया है जहाँ पे एक लकवाग्रस्त महिला 40 वर्ष की आयु में उठकर खेलने का सपना देखकर फिट इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन जाती है। ये वो भारत बन गया है। यहाँ पे ठीक है, हमारी पॉपुलेशन बहुत है, डाइवर्सिटी बहुत है, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, बट द जर्नी हैज बिगन। वी आर टुडे टॉकिंग अबाउट न्यू इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट globalization, and at the same time we are reviving our heritage. Honorable Prime Minister Sir has created such a beautiful balance for today, for India at 75, while we are looking at becoming a economic, a sports superpower. We are moving towards futuristic development. At the same time, we are reviving our culture, our heritage, values. This is my new India. हम अपने भारत को स्वच्छ करना चाह रहे हैं, हम अपनी जनरेशन को फिट बनाना, हम फिट तो इंडिया फिट, हम योगा, इंडिजिनस, खो खो, मलखम, कबड्डी ऐसे खेलों को हम रिवाइव कर रहे हैं, उसमें हम अपना भारत देख रहे हैं। आज आप देखिए टीवी पे कवरेज, आपने कभी क्रिकेट के अलावा कुछ देखा था? आज आप देखिए ढेरों खेल, खो खो लीग तक शुरू हो गई है, कबड्डी लीग शुरू हो गई। But Nirmal ji, let me ask you. She said about Kho-Kho League, Kabaddi League, and women doing so much. But Kho-Kho League, Kabaddi League, even IPL is not there for women yet. So there is a lot of ground that we need to cover. But let me ask you, how has things changed? I think in the police service which I belong to, things have changed in a big, big way. All uniformed services, in fact. In fact, I would say all services, but right now I'm going to speak only for uniformed services. When I joined service, maybe some 40 years ago, the only women we had in the police were a very few women who were recruited on compassionate grounds. You know, in government there's a rule, if a person dies, the dependent is given an employment. So they were lady wives or somebody, and they would often have their children playing, and everybody, you know, looked down upon them. Uska kya hai, lady police hai, lady constable hai, ya lady wo hai, wo kya karegi? You know, they were like written off. Just because she was a lady, she was written off. कि कुछ नहीं, वो काम नहीं करती, उल्टा शी इज अ लायबिलिटी, अब इनको पहले ड्यूटी पे लाना है तो पहले पहुंच लेनी चाहिए, फिर इनको एस्कॉर्ट बैक कीजिए, क्या होगा? तो ये हमारी क्या ड्यूटी करेगी, हमें इनको ड्यूटी करनी पड़ती है. You know, by the time I came to, you know, things moved, you know, in late, I would say 90s, early, you know, there was a 30% reservation for women in many states, 6-7 states. And by the time I joined Bureau of Police Research and Development, which was 11, we worked on many of these modules, and the Home Ministry announced that there will be a 30% reservation of women not only in police, state police, but also in the Central Armed Police Forces. That was a 2016 announcement of, and today you see BSF mein, CRPF mein, in all the Central Armed Police Forces, there are so many women, and not only they are women numerically, you know, there are these exclusive Mahila battalions. The whole battalion is made up of women, and they are doing so well. Even on a parade ground, the smartest turnout is women. Yeah. So, you know, the girls, and even you see in encounters, our best shooters, we have a role model here. Our best shooters are women. Yeah. So, you know, जब हम लोग जाते हैं एनकाउंटर के लिए कुछ करते हैं, पहले लेडी है नहीं लेके जाएंगे. Now they say, अच्छा, ओ, अच्छा, सुधा को दे दो, उसको दे दो. You know, they are such good marksmen, and they are very agile, they are very fit on their duty. So, you know, the whole attitude has changed. Yeah. So I think that's a very welcome thing. We have some way to go. We have a long way to